prince named Siddhartha Gautama. In northern India, at 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. Scriptures क्या होते हैं शंकु? हम्म। Scriptures वही जो पाठशाले. स्क्रिप्चर वो होते हैं, जैसे वो नहीं होते, स्क्रिप्ट जो होती है यार, तो रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट होती टेक्स्ट। है. मैन्युस्क्रिप्ट होती है वो तो. तो वही सब होते हैं स्क्रिप्चर्स भी। हम्म। Gautam Buddha, the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years, and as befitted royalty. At about the age of 12, the prince. 12 साल में शादी हो गई थी. At the age of 12, 16 25. साल में हुई थी। क्यों? At 12, he was sent away for schooling, and 4 years later, he returned home to marry a princess. At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world. While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. Alms क्या होते हैं? पैसे, भीख। These sights so moved him that he at once went out to the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. Enlightenment after 7 days he remained the, the tree, the Bodhi tree of wisdom, and began to teach and share his new understandings. At that point he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. The Buddha preached his first sermon की हुंदी है अच्छा moral talk. First sermon at the city of Benares, most holy of dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and it's given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable, something which cannot be understood kind of suffering. Kissa Gautami had only one son, and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses, the boy is dead. At length, Kissa Gautami met a man who replied to her request, I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can. And the girl asked, pray tell me, sir, who is it? And the man replied, go to Sakya Muni, the Buddha. Kissa Gautami repaired to Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. The Buddha answered, I want a handful of mustard seeds. And when the girl, in her joy, promised to procure it, the Buddha added the mustard seed should be taken from a house where no one has lost the child, husband, parent, or friend. Poor Kisagod now went from home to house to house, and the people pitied her and said, "Here is the mustard, take it." But when she asked, did the son or daughter or a father or a mother die in your family? They answered, "Alas, they living are few, but the dead are many. Do not remind us for us deepest grief." And there was no house, but some beloved one had died. Kissa Gautami became very weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the sky of the city as they flickered up and were extinguished again. शंकु उस टाइम पे लाइटें होती थी. वो तो होती थी मोमबत्ती वगैरह, लाइट है और ना, बिजली वाली 563 होती थी। 563 BC में हाँ, आग तो तो फ्लिकर लगाते कैसे थे, होती थी वो. मसाले टाइप। At last the darkness of the night ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ.
छा गई। सारी जगह छा गई और she considered the fate of men, that their lives flicker up and they extinguish again. And she thought to herself, how selfish am I in my grief? Death is a common to all, yet in this valley of desolation, there is a path that leads them to immortality, who has surrendered all selfishness. The Buddha said, the life of mortals in this world is trembled and brief and combined with pain. Oh, there is not any means which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in dangers of falling, so mortals, when born, are always in danger of death. As all earthen vessels made by a potter and is being broken, so the life of mortals. Both young and adults, both those who are fools and those who are wise, are fall into the power of death. All are subject to death. Of those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son, nor kinsmen. Kinsmen कौन थे? जो वो लोग होते हैं जमीन के कुछ होते हैं बिजनेसमैन टाइप। Kinsmen, their relations mark, while relatives are looking on and laminating deeply. One by one, mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore, the wise do not grieve, knowing the terms of the world. Nor from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by the lamentation. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and had become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. क्या है चैप्टर है कुछ समझ नहीं आया. जो शुरू का तो आता है ना, वो 12 साल किस्सा का था बहुत अभी तक समझ उसको। आ गया कि हाँ उसका बच्चा बुच्चा मर गया वो सब समझ आ गया. फिर ये जो इतना भांग घोसड़ा पड़ा है यहाँ से यहाँ तक. वही सब कह रहा था कि सब गौतमी थक गई, उसको फिर लाइटें देखी उसने तो उसको समझ आ गया कि बुद्धा मेरे को क्या दिखाना चाह रहा था, कि सब मरते ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो आता है वो चल जाता है। फिर वो कहता है ऐसे जो फ्रूट होते हैं वो गिरने के उस पे होते हैं डेंजर में नीचे पेड़ से। और जैसे कि जो वेसल पॉटरी बनाता है पॉटर, वो सारी आखिरी में टूटती है। वैसे भी सारे लोग आखिरी में मरते ही हैं, चाहे बंदा छोटा हो बड़ा हो स्मार्ट हो पागल हो, सब सबने मरना ही होता है। और जो बंदा ऐसे कि कोई अपना फादर सन नहीं बना सकता, किड्स में नहीं बना सकते, तो वैसे वैसे ही एक एक करके सारे लोग मरते ही हैं। जैसे कि जो गाय होती है उसको मारने लेके जाते हैं, ठीक है। क्या क्या क्या. जैसे तू बचा नहीं सकता ना किसी मरने वाले को, जिसने मरना है मरना ही है, तो ऐसे सारे बारी हम्म. बारी लोग मरने जा रहे हैं। और जैसे कि गाय को मारने लेके जाते हैं वैसे ही। तो मतलब कि जो समझदार लोग होते हैं ना, वो किसी के मरने पे उदास नहीं होता, जो कि उन्हें पता ही होता है कि मरना ही है। और फिर वही रोने वोने से बस दिमाग खराब होता है, बंदा बीमार हो जाता है। लेकिन जो मरे होंगे वो वापस नहीं आ सकते ना वापस, तो फिर उसको पीस कर लेना चाहिए अपने, उससे जो उदास हो रखा है उससे पीस ढूंढ लेना चाहिए। तो जो ऐसा पीस ढूंढ लेता है वो ब्लेस हो जाता है और उस वो दुख से फ्री हो जाता है। ठीक है। Martha is having difficulty sleeping lately and no longer enjoys doing things with her friends.
Martha lost her husband of 26 years to cancer a month ago. Anya, age 70, doesn't feel like eating and spends the day in her room crying. Her grandmother recently died. Both of these individuals are experiencing grief. Grief is an emotion natural to all types of loss or significant change. Feelings of grief, sadness होती है, anger आता है, guilt and self-approach. People may believe that they were not kind enough or caring enough for the person who died, or that the person should have seen the doctor sooner. Anxiety होती है, loneliness हो जाती है, fatigue, tired हो जाता है बंदा, थक जाता है, disbelief. This occurs particularly when the sudden death. Good grief. Soon, क्या? तेरे को नहीं कह रहा। ये फुद्दी है. Soon after my wife died, her car slid off an icy road in 1985. A school psychologist warned me that my children and ये I कौन were सा not चैप्टर है? moving हाँ, in the गुड right ग्रीफ। way. यही है We चैप्टर में felt that आता है। क्या मुंह क्या बना रहा है? ये कब आया? ये भी आया था। the, the proper stage, he said, is denial. In late August the ये तो year, पढ़ाया my नहीं। 38-year-old son Michael died suddenly in his sleep, leaving behind a 2-year-old son and a wife expecting their next child. There is no set form for grief and no right way to express it. There seems to be an expectation that after a great loss we will progress systematically through the well-known stages of grief. It is wrong. We are told to jump to anger or to wallow too long in this stage before moving towards acceptance. But I was and am angry to make parents bury their children in wrong. To have both my wife and son taken from me forever and a day is cruel beyond words. A relative from Jerusalem, who is a psychiatrist, brought some solace by citing the maxim, "We are not to ask why, but what. The what is that which survivors in grief are born to do for one another." Following their advice, my घूमने जा रहा है, family, घूमने close जा रहा friends, है। and I keep busy मेला calling घूमने। each other and giving long answers to simple questions like "How did your day go?" We try to avoid thinking about either the immediate past or the brief future. We take turns playing with my Max, Michael, 2-year-old son. Friends spend nights with this young lucky तेरी माँ का बोल छड़ा यहाँ young चैप्टर है। widow and with among those holding the hand when the baby is born. Focusing on what to do for another is like consolation we can find. Lucky means में कितने आए पूछिए इससे अभी चल लकी जाएगा. लकी बता नंबर तू पूछ इतना रहा है। यार तू तो चला गया। देखा है ऐसे ही है तो भेजने के लिए सही है. लकी ने मेरे को भी नहीं बताया कितने मार्क्स आए। गद्दार कहीं का। वो तेरे को आए नहीं बताया भरावा तो चाचा लकी ने. लगता है इसका। है? हाँ. हाँ। बताइए कितने आए? पूछ ले। वो नहीं बताया, जब पता तो है। तो बस फिर नहीं बताया, नहीं बताया। वो क्या मेरे से पूछ रहा है कितने आए हैं। कितने आए हैं? हैं? क्वालिफाई हो गया, नंबर पूछ रहा है कितने आए हैं। बता ना। बता। वहाँ पे क्वालिफाई हो गया तो अब पहले देखेंगे। ये तो गलत बात है। वो कौन सा ग्रीफ वाला, कौन सा था वो गुड ग्रीफ? यही था बनारस वाला। उसके बाद भी आते हैं? हाँ, आता है। मैंने तो वही पढ़ी, उसके क्या किस्सा था बहुत नहीं सुनको करते। ग्रीफ वाले में क्या लिखा था? वही उसके एक साइकियाट्रिस्ट होता है अफ्रीका से, एक उसके स्कूल का वो होता है। अफ्रीका वाला कहता है कि हमने ऐसे नहीं पूछना क्यों मर गए, कैसे मर गए। हमने आपको सोचना है कि अब क्या करें, तो जो जो रह गए हैं उनसे मतलब उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। मतलब कैसा दिन गया और मतलब आगे क्या आएगा और क्या हो चुका है उसके बारे में भी नहीं बात करनी चाहिए, जो हो रहा है उसके बारे में करनी चाहिए। अब अब ऑर्डर कर लेते हैं। बड़ा बड्डा है यार. नीचे भी लो। ओ ये भी सौखा ही है। करने सारे हैं, करने सारे। सारे सोखे हैं, तो फिर करना क्या है उन्हें फिर। बड्डा बहुत है मम्मा. कोई बात नहीं।
समरी ना पढ़ लें सिर्फ। नहीं, देख हार्दिक, पेपर फाइनल पेपर है, अभी भी समरी पढ़ के जाएगा, शर्म नहीं आएगी तेरे को थोड़ी? मेरे को लग रहा है ऐसे मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ। क्यों नहीं आ रहा है? चौथे में से रीड करवाई जा रहे हैं बस। आपका कुछ ਹੁੰਦਾ नहीं आपको। हमें दोनों खांसी है। खांसी है वो देख, ਹੁਣ ਤਾਂ खांसते जान का की खांसते हैं करो तो जब तक जान की खांसते हैं। फूक दे जा ओए। मैं नहीं था मम्मी, गुरनूर था। चल तू तो, चल देखो क्या हो गया, लाल टी शर्ट है। चल स्कूल से क्यों नहीं आवाज निकलती तेरी, मेरे को समझ नहीं आता। मैं स्कूल से सामने खड़ा हो जाता ना, मैं पूरा जैसे उससे निकल जाता सारा। स्कूल में पता है ना, पीट देंगे, यहाँ कुछ नहीं कर सकता कोई। Early in the New York of 1956, I traveled to southern Iraq. By then it यार 2 मिनट रुक जा। 25 पे पढ़ते हैं, दोबारा शुरू करते हैं। गाना लगा दे कोई। ओए, दादा से बात कर ले। किससे? दादा से। कौन? दादा। अच्छा, तो ऐसे क्या है? सबका वैसे ही कह रहा हूँ। हेलो, नमस्ते दादाजी। अच्छा यार। बड़े हैं तो आप बताओ।